ये कल की न्यूज़ है जिसमें यूएसए एक कोशिश कर रहा है इंडिया जो नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा रहा है। जब यूएस का प्रोडक्ट इंडिया में आता है तो यूएस चाह रहा है कि इंडिया नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाए। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब कि वो चीज़ें लाइक टैरिफ जो हम किसी सामान पर डायरेक्टली लगाते हैं, जैसे कोई कंट्री से, चाइना से हम कुछ इंपोर्ट करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल फ़ोन। तो फ़ोन पे अगर मान लो फ़ोन का दाम है 10,000 तो हम उस पर मान लीजिए 10% टैरिफ लगा दिए, तो फिर 1,000 उसका दाम बढ़ गया, तो फिर हो गया आपका 11,000 दाम। तो लेकिन ये तो टैरिफ हो गया। नॉन टैरिफ बैरियर्स वो होते हैं जो मतलब जो किसी देश के इम्पोर्ट सामान पर लगाया जाता है ताकि वो सामान हमारे देश में ना चल सके, या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और एक कोशिश की जाती है कि वो सामान हमारे देश में ना रहे, या फिर हमारे अपने मार्केट को बचाने के लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें से कई प्रकार के जैसे नॉन टैरिफ बैरियर, जैसे टेक्निकल बैरियर की अगर कोई प्रोडक्ट ही है उसमें अगर if there is not technical barriers that is used is called that is used technical barriers like labeling, like when a food, like for example when Kisam jam is came from USA to India, then there would be those custom officers said that this is not the labeling. The labeling of this product is not according to our country's policy. So by doing this what I say, technical barriers, they can restrict those products to coming in India and to flourish its own home ground, its own local companies to flourish. Like और भी कई जैसे प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, लाइक अगर कोई यूएसए से कोई सामान आता है तो उसमें से हम सर्टिफिकेशन भी मान सकते हैं कि हाउ कैन वी बिलीव दैट योर प्रोडक्ट इज जेन्युइन, नॉट एनी पॉइजनस और एनी हार्मफुल फॉर कॉमन पीपल। सेकंड जो आता है वो आता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, लाइक कोटास, एम्बार्गोस, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। लाइक कोई बड़े बड़े शिपयार्ड में आते हैं, कोई भी सामान इंपोर्ट पे, जैसे कार ही हो या कोई व्हीकल ही हो, कोई सामान ही हो, खाने का सामान ही, कपड़ा ही, तो बड़े बड़े शिपयार्ड को भी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये नॉन टेक्निकल बैरियर में वैसे ये था, जो नॉन कस्टम बैरियर्स हैं उसी में ये सब होता है। टेक्निकल बैरियर्स, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड कस्टम प्रोसीड्यूर्स, रेड टेप, स्लो क्लियरेंस। जैसे इंडिया में तो ये दिस इज पॉपुलर trend that there is a slow clearance in everything, and if you are going in a government job or if you are going in a government office, then there will be obvious you need to be learned to that there will be a slow clearance for you. So these are the non-tariff barriers that any country, not only India, like China is the best example of it. China just openly banned the foreign apps, like there is no any Facebook, Instagram or WhatsApp in China. China made its own apps like Instagram, Facebook, WhatsApp by copying the technology of USA, and therefore this is one of the reasons that Trump is so much angry on China. This is one of those reasons. So लेकिन अगर यही हो सकता है कि ये रिस्ट्रिक्शन जो भी लगाया जा रहा है नॉन कस्टम बैरियर्स, वो लगाया क्यों जा रहा है, इंडिया क्यों लगा रहा है अमेरिकन के प्रोडक्ट्स पे। तो इसको जो मेनली कई रीजन जो अमेरिकन कंपनी है वो ये देती है कि इंडिया अपने जो लोकल कंपनी है उनको बढ़ावा देने के लिए उनके खिलाफ बायस्ड है, उनको सपोर्ट करने के लिए ये सब मेजर्स लेती है। और ये कोई पहली बार नहीं है। यूएस के जो कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन कंपनीज है, वो बार बार ये कंप्लेंट करती है कि इंडिया जो है वो इंडिया का जो इन्वायरमेंट है, जो अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो एक ऑपेक है, अनप्रिडिक्टेबल है, एंड जो इंडिया है अपनी कंपनी की तरफ पक्षपात इंक्लाइन रहती है। और इसमें से जो मेन जो आया है जो कि ताकि कोई फॉरेन कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्ट न करे, उसमें सबसे पहली जो है जो डोनाल्ड ट्रम्प चाह रहे हैं कि इंडिया में यूएस के एग्रीकल्चर सामान आए इंडिया में विदाउट एनी कस्टम बैरियर। तो इसमें तो इंडियन किसानों का घाटा लगेगा। तो पहला जो है एग्रीकल्चर है, फिर डेयरी है, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल्स एंड ई कॉमर्स फेस परसिस्टेंट हर्डल्स। सो दीज आर द रीजंस। एंड जो ट्रम्प जो सेकंड टर्म है उन्होंने तो पहले से अपने जब when he is using his political campaign, then he is showing a good sign of that he will
tariff on all the countries in the world, whether they are friend or foe. He will tariff on all the countries, and that he did on 2nd April. He called it as Liberation Day. Imposed all the he imposed in all the countries, nearly all the countries, on tariffs, like European Union, his best ally, Canada, Mexico, all the countries. So he showed in his very political campaign that he is going to use tariff as its tool to make America great again. And Trump in his second time threats that the tariff on the table for the countries, that if you don't liberalize access to American goods and services, then we will put your tariffs on your goods, and your goods will not able to your companies will not able to sell their goods in our market. US is the biggest market in the world with 25% of economy of the world. So, and this pressure can be designed to secure reciprocal trade arrangements. Mean, if India wants access to USA market, it must open its own market as well. Therefore, when J.D. Vance comes to India, he emphasized on it that Indians administration is to try to hinder the US-based companies to come into China. Like India previously puts 100% tariff on Harley Davidson bag, but it's now slowed down to 52%, unless now it is also lessening its tariff barriers. So if you ask me that what is the specific American demands, the first is when J.D. Vance comes to India, and there is in the trade negotiation between India and USA, is first one is that USA said liberalize e-commerce rules that currently restrict US firms like Amazon and Walmart. Means liberalize your e-commerce rules. Second is ease data localization norms that prevent cross-border flow like Google and Meta. Third, he said facilitate imports of US dairy, agriculture, and some medical devices. And fourth one is simplify licensing and testing norms for electronic and medical devices. So these are the specific USA demands that J.D. Vance carried out, and that would be a pivotal point in the negotiation of India and US trade talk. And I would like to appreciate the US. I would like to appreciate Indian government that perhaps India is going to be the first country to escape to what I say to restrict or to move out itself from the Donald Trump US tariffs. So, and if India cracks this deal, then India would be the first country to crack this deal, and that was a very good news for all the Indians of our country, because whatever you said about Modi government, whether they are dividing society, they are igniting, what I say, religious turmoil. But one thing is in Modi's government is fixed, that their foreign diplomats, their foreign rules is great. They have a they have an upper hand over foreign negotiations. So that's all about the news.